Hello students, myself Bashir Ahmed. Now today I'm going to teach you another topic in 19th century, and the topic is the flow of labor. In the previous video we discussed about the end of Corn Law and how to abolish and the impact of Corn Law. So now in this video we discuss about the flow of labor. One by one we discuss each and everything of this chapter. Clearing the land for farming was not enough. It is not enough for only clearing the land for farming purpose. Railways were also needed to connect the agricultural areas with the ports. It's not sufficient to clean the land for farming purpose. Railways were also needed to connect the agriculture areas with the ports. It means railway connect with ports. Why? Because of that, sended goods from remote areas through railway. Now to transport large quantities of freight, it means goods, it was necessary to build new towers and spread the old dock. If we want to transport in a huge quantity, it's need to connect every port with railways. Railways collect the goods and transport in the remote areas. Now in order to cultivate new lands, if you want to cultivate new lands, it was necessary that people from other areas would come and settle there. In order to cultivate new lands, it is necessary to people come and settle there and start farming, either cultivate land, build new houses and establish new settlement in new land. All these works required capital and labor. All this work needed capital and the labor. For this, capital started coming from financial center like London. And the capital come from London. Why? Because of that, London is a hub of capital industry. Now in places like America and Australia, where there was shortage of labor, in America and Australia, where there was shortage of labor, people started to move, and that meant labor flow. Shortage of labor, it means in that places people move from other places. Like America and Australia, where there was shortage of labor, people started to move, and that meant labor flows. In the 19th century, about 5 crore people of Europe settled in America and Australia. Because of that, they look for better jobs opportunity. They're looking for a better job in that places. About 5 crore people of Europe settled in America and Australia. It is believed that about 15 crore people all over the world left their homes and started working in far off the countries with the hope of good future. 5 crore people left America and Australia for searching a better life, for searching a better job in nearby country. 15 crore people all over the world left their homes and started working
in far off countries in the hope for the better future. So now that is the 19th century and the flow of labor. Today we discuss about the flow of labor. So that is the 19th century and today we discuss the flow of labor. आज हम हिस्ट्री में कॉर्न लॉ के इफेक्ट के बाद, हमने पिछले वीडियो में कॉर्न लॉ और उसके इफेक्ट पर डिस्कशन किया था. आज हम 19th सेंचुरी में फ्लो ऑफ लेबर पर डिस्कशन कर रहे हैं. लैंड को क्लियर करना एग्रीकल्चर के पर्पस से ये काफी नहीं था. जरूरी यह भी था कि रेलवेज को कनेक्ट किया जाए उन एग्रीकल्चर एरियाज से और पोर्ट से, ताकि एग्रीकल्चर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सके. इसके साथ साथ लार्ज क्वांटिटीज में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी था कि जो रेलवे का नेटवर्क था वो डकयार्ड के नियर अबाउट एस्टैब्लिश किया जाए. न्यू लैंड्स को कल्टीवेट करने के साथ ये जरूरी था कि उस नए एरियाज में लोगों का बसना भी स्टार्ट हो, यानी सेटलमेंट भी उस नए एरिया में लोगों का हो, लोग अपना मकान बनाएं, लोग अपना रहना शुरू करें उस नए एरिया में जो खेती के पर्पस से, एग्रीकल्चर के पर्पस से नया लैंड एस्टैब्लिश हुआ है. इन सब एक्टिविटीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कैपिटल, यानी मनी की जरूरत है, और दूसरा लेबर जो इस काम को करेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि यह कैपिटल आएगा कहां से. उस टाइम इस कैपिटल का हब, यानी एक तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जो हब था वो लंदन शहर था. इन प्लेसेस लाइक अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर द शॉर्टेज ऑफ लेबर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग यानी लेबर्स की शॉर्टेज थी, इसलिए लोग मूव करने लगे एक इन सब जगहों से दूसरी जगहों पर. क्यों? इसी से लेबर्स का फ्लो स्टार्ट हुआ. भाई जो वर्कर्स के पास अगर जॉब नहीं होगी तो वो जॉब की तलाश में दूसरी जगह यानी माइग्रेट होगा. इन द 19th सेंचुरी अबाउट 5 करोड़ पीपल ऑफ यूरोप, एक एस्टिमेट है कि 19th सेंचुरी में 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सेटल्ड इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड हुए. It is believed that 15 crore people all over the world, 5 करोड़ लोग in the 19th century, about 5 crore people of Europe settled in Australia and America. 5 करोड़ लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बस गए बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटी और बेटर लाइफ स्टाइल के लिए. वो ये भी मानना था, इट इज बिलीव दैट 15 करोड़ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के पूरे हिस्से से 55 करोड़ लोग छोड़ दिए अपने घरों को और नेबरिंग कंट्रीज में मूव कर गए बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटी और गुड फ्यूचर की होप में. लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किए. पिछले वीडियो में हमने कॉर्न लॉ और उसके एबॉलिश का इफेक्ट पढ़ा था. इस वीडियो में हम द फ्लो ऑफ लेबर को डिस्कशन कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्नोलॉजी को डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए. स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, जहां पर आप ग्लोबलाइजेशन के कुछ उसको डिस्कशन करेंगे. हमने फ्लो ऑफ लेबर को डिस्कशन किया है, हमने फ्लो ऑफ गुड्स को डिस्कशन किया है. तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन कर रहे हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का करेंगे 19th सेंचुरी में.